पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी।
का भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आज 3 नवंबर 2024 की मुरली सुनेंगे। Today we will listen to the Avyakta Murli आज of 25 3 November 2024. 2002 की The revised date of today's Murli वाणी is 25 October 2002. आज की मुरली की हेडलाइन है The headline of today's ब्राह्मण Murli, जीवन का आधार the basis of Brahmin life, रॉयलिटी। is the royalty of purity. आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। Today the ocean चारों of ओर के love स्नेही बच्चे is seeing his loving children, रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए all of you loving children from everywhere, होम में tied with a subtle spiritual string, have arrived at your sweet home, जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं। just as your children have वैसे arrived बाप here, भी बच्चों को having स्नेह been की pulled डोरी by में love. बंधा हुआ In the same way, the Father too, सन्मुख tied with the string of the children's love, has personally arrived in front of your children. के चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये Bab Dada is saying that all the children everywhere, while sitting far away, are still absorbed in love. के माध्यम से बाबा Some children are sitting very far, far away through the internet, and they are listening to Baba's version. And for them, Baba is saying, देख रहे हैं Bab Dada is saying the children who are personally in front of him
हर्षित and also the children sitting far away, and he is pleased with them. अविनाशी स्नेह This spiritual imperishable love, the love of God, आत्मिक स्नेह this all conscious सारे love कल्प में अभी अनुभव is only experienced now in the whole cycle. बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयलिटी देख रहे Bab Dada is seeing the royalty of purity of every child. प्यूरिटी The royalty of Brahmin life is purity. हमारी रॉयलिटी क्या है What is our royalty? Purity. तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयलिटी की निशानी So Baba is seeing on each child's head the symbol of spiritual royalty, आप the crown of the light अपनी of purity purity. का ताज रूहानी रॉयलिटी का ताज देख रहे हैं Are all of you also seeing your crowns of purity and your crowns of spiritual royalty? Are those sitting at the back seeing them? Baba is asking. कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है This is such a beautiful gathering of those who are crowned. It is, isn't it, Pandavas? The crowns are sparkling, are they not? You are seeing such a gathering, are you not? Kumaris, you are Kumaris with crowns, are you not? बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ Bab Dada is seeing that the royal family of the children is so elevated. को याद करो Remember your eternal royalty धाम में अपने आत्म in the स्वरूप Supreme Abode when we were stabilized in our soul conscious stage. Baba says, remember your eternal royalty जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो when you souls are living in the Supreme Abode. आपकी रूहानी रॉयलिटी Your spiritual royalty in the form of the soul is special. आत्माएं भी लाइट रूप में हैं All souls are also a form of light. आपकी चमक सर्व आत्माओं में But compared with the rest of the souls, your sparkle is elevated. परम धाम Do you remember the Supreme Abode? अनादि काल से From the beginning of time, your sparkle and intoxication are unique. आकाश में देखा होगा You must have seen in the sky तारे सभी how all the stars are sparkling सब लाइट ही हैं and how they are all light. इन सर्व सितारों में But out of all the stars, सितारे की चमक the न्यारी sparkle of some special stars is more lovely and unique. ऐसे ही सर्व बच्चों में In the same way, सर्व आत्माओं के बीच compared with all other souls, आत्माओं की चमक the sparkle of you souls, रूहानी रॉयलिटी the sparkle of your spiritual royalty and purity is unique. याद आ रहा है ना You do remember this, do you not? आदि काल में आओ Then come to the beginning of time. कि देवताई स्वरूप की रॉयलिटी याद करो If you remember the beginning आदि काल period, को याद करो the golden aged period, आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयलिटी की even in the beginning period, how special was the personality of spiritual royalty in your deity सारे form. कल्प में देवताई स्वरूप की
through the whole kalpa, does anyone have the royalty of the deity form? रूहानी रॉयलिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? You do remember your spiritual royalty and your personality of purity, do you not? आ गया? Do you Pandavas also remember? फिर Have you now remembered? Then come to the middle period. द्वापर से लेकर Then from the middle period, पूज्य चित्र that is from the Copper Age onwards, when your worthy of worship pictures are made, और पूजा की रॉयलिटी are there any other pictures that have that royalty or the royalty of worship? चित्र की है? There are pictures of many, but are there any other souls who are worshipped accurately in the right way as you are? पूर्वक पूजा किसी आत्माओं की है? Are there any other souls who are worshipped accurately in the right way as you are? चाहे नेताएं हैं, Whether they are religious leaders, चाहे अभिनेताएं हैं, political leaders, or actors, सबके बनते हैं, pictures are made of all of them. लेकिन चित्रों की रॉयलिटी और पूजा की रॉयलिटी But have you seen किसी की that same royalty of the pictures and royalty of worship of the pictures of any of them? पूजन होता है, वो विधि The पूर्वक deity pictures are worshipped. पूजा The temples are being made of the deities डबल and they are worshipped systematically. देखी है? Have you double foreigners seen your own worship? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ Have you all seen it or have you just heard about it? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी भी नहीं हुई है? No other pictures have had such accurate worship or sparkle and spirituality, nor will there ever be such pictures. पूजा क्यों होती? Why? प्यूरिटी की Why deities are worshipped systematically? Because प्यूरिटी की the deities have the royalty of purity. अच्छा देख लिया? You have the personality of purity. Acha, have you seen your own worship? से देखते भी जाओ साथ साथ। You continue to look at yourself. नहीं देखी हो तो देख लेना। If you haven't seen it, then see it. अभी लास्ट में संगम युग पर आओ। Now lastly, come to the संगम confluence पर ही age. सारे विश्व के अंदर Even at the confluence age, royalty, all over the world, ब्राह्मण जीवन the royalty of purity is the basis of Brahmin life. प्यूरिटी नहीं, If there isn't purity, प्यार का अनुभव भी नहीं। there isn't the experience of God's love. सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव भी And there is also isn't then the experience of all godly attainments. पर्सनालिटी प्यूरिटी है, The personality of Brahmin life is purity, रूहानी रॉयलिटी। and purity is spiritual royalty. अनादि, Therefore, आदि, मध्य eternally और and originally, from the beginning through the middle to the end of the cycle, चलती रहे। this spiritual royalty continues through the whole cycle. को देखो, Therefore, each of you look at your own self. सबके पास है ना? Each of you has a mirror, do you not? दर्पण है, Do you have a mirror? देख सकते हो।
Can you see in that? तो देखो Then look, हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयलिटी कितने परसेंटेज में है। look and see to what percentage हमारे you have the royalty of चेहरे purity within प्यूरिटी you. की झलक दिखाई देती है। Is the sparkle of purity visible on your चलन face? में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। Is the sparkle of intoxication of झलक, purity visible in your फलक behavior? अर्थात नशा। The sparkle of चलन intoxication में वो फलक means intoxication. अर्थात रूहानी नशा In your दिखाई behavior too देता is the है। sparkle of intoxication, is the spiritual intoxication visible? देखने में Have you कितना seen समय yourself? लगता है? How long does it take to look? सेकंड ना, A second. तो सभी ने देखा अपने को। So have all of you seen yourselves? अब कुमारियों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। Now Baba is talking to the Kumaris. झलक फलक है, Do you have the sparkle and अच्छा intoxication? है। It is good. सभी उठो, All of you get up, खड़े हो जाओ। stand up. कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी है, Each Kumari has a red sash around जिस her पर लिखा है on which is written एक व्रता। Ek Vrata, commitment to सुंदर one. लगता है ना। It looks beautiful, does it एक not? व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयलिटी। Ek Vrata means the royalty of purity. पाठ पक्का कर लिया है। So have you made the lesson of Ek Vrata firm? वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। When you go back, don't become weak. और कुमार ग्रुप उठो, Now the group of Kumars stand up. कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। The group of Kumars is also good. कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया। Kumars have tied the band of a promise in their कुमारियों hearts, ने तो बाहर से भी बांध लिया। and these Kumaris have tied it eternally and externally. प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है, Have you tied the band of a promise अर्थात निरंतर that you are प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले the one who always stay in the personality of purity, or you Kumars will constantly be? Is it like this? बोलो Say, Hanji. ना जी या हाँ जी, Is it no or yes? या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ढीला हो गए। Or will you write letters when you get back saying ऐसे नहीं, that you have become a little slack? जब तक Don't do ब्राह्मण that. जीवन में जीना है, While you are living in a Brahmin life, संपूर्ण पवित्र रहना। you definitely have to remain completely pure. ऐसा वायदा है, Have you made such a promise? पक्का वायदा है। If your हाथ promise मिलाओ। is firm, wave one hand. टीवी में आपका फोटो निकल रहा है, Your photographs are being taken by the television. जो ढीला होगा उसका ये चित्र भेजेंगे। And those who become slack इसलिए will be ढीला sent these नहीं photographs. पक्का रहे। Therefore, don't become slack. Stay very strong. Yes, you are strong. पक्के होते हैं ना, पक्के Pandavas are always strong. अच्छा। Strong Pandavas, very good. प्यूरिटी की वृत्ति है,
शुभ भावना, शुभ कामना। The attitude of purity कोई is of good कैसा wishes and pure feelings. लेकिन पवित्र वृत्ति No matter what someone is शुभ like, भावना a pure attitude means good wishes and pure और feelings. पवित्र दृष्टि अर्थात Having सदा pure हरि vision को means आत्मिक रूप में देखना to see या everyone फरिश्ता constantly in the soul conscious form or the angelic form. दृष्टि Therefore, और तीसरा है attitude, कृति vision, and the third is अर्थात actions. कर्म में भी So, in your actions सदा too, हर आत्मा को सुख देना constantly और give happiness सुख लेना। to every soul and receive happiness. दृष्टि की निशानी और कृति की निशानी The बाबा sign of attitude, vision, and actions, है Baba said about that, this is the sign of purity. वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा। Let there be this dharana in your attitude, vision, and actions. दुख भी देता है, No matter what someone does, इंसल्ट even if he is causing you sorrow or insulting you, हमारा कर्तव्य क्या है? what is your duty? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है Do you have to follow the one who is causing sorrow or to follow Bab Dada? फॉलो फादर है ना? You have to follow the तो Father. ब्रह्मा Do बाप you ने not? दुख दिया व सुख दिया। So did Father Brahma cause sorrow or give happiness? दिया ना? He gave happiness, did he not? तो आप मास्टर ब्रह्मा Therefore, अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? what do you Master Brahmas, you Brahmin souls, have to do? तो आप क्या करेंगे? If someone causes you sorrow, what will you do? दुख देंगे? Will you cause sorrow? बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करें तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? What if someone causes you a lot of sorrow or insult you a lot? कुमारियाँ फील करेगी? If someone insults you a great deal, would you feel it a little or not? थोड़ा Will you Kumaris feel it? A little perhaps? फादर Therefore, follow the ये Father. सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। Think, what is my duty? बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, तुम्हारा टाइटल है In one of the Murli, Baba had said, ईमान, your title is तुम्हारा कर्तव्य है Master Almighty Authority कल्याणकारी। and you are world benefactors. उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। Don't forget your own duty by looking at the duty of others. आप The सहनशील other देवी, person is insulting you, सहनशील देव so just to become a deity of tolerance. आपकी सहनशीलता से Become a male deity of tolerance, देने वाले a female deity of tolerance. आप गले लगाए। Through your tolerance, the one who insults you will सहनशीलता embrace you. इतनी शक्ति है। Tolerance has that much power, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता but you do have to tolerate it for a little है। while. सहनशीलता की देव व देवियां होना Therefore, your deities of tolerance, are you not? Are you? सदा यही स्मृति रखो, Constantly have मैं this awareness.
देवता, I am a deity of tolerance. सहनशीलता की देवी, I am a goddess of tolerance. देवता अर्थात So a deity देवी means माता। a bestower who gives. कोई गाली देता है, If someone रिस्पेक्ट is नहीं insulting करता you है, and not respecting you, किचड़ा है ना then that is rubbish. कि अच्छी चीज है। Or is it something good? कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट If anybody is insulting you and not giving you respect, that is rubbish. क्यों हो? So why do you take it? किचड़ा लिया जाता है क्या? Is rubbish to be taken from others? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? If someone gives you नहीं rubbish, लेंगे ना, would you take it? तो रिस्पेक्ट You नहीं wouldn't. करना, Would you? इंसल्ट करता If है, someone doesn't respect गाली you, देता है, if someone insults आपको you डिस्टर्ब or करता है, swears at you, तो ये क्या if someone disturbs you, what is all of that? अच्छी चीजें हैं? Is it something good? फिर आप लेते क्यों हो? Then why do you take it? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, You take it a little, do you not? पीछे सोचते हो नहीं लेना था, You take it a little and you then think, अभी लेना I नहीं, shouldn't have taken that. Now, थोड़ा don't take थोड़ा it. लिया, ऐसे नहीं। हमें ये चीजें It isn't that you have taken it a little. लेना अर्थात Now, don't take it. मन में धारण करना, To take it means for your mind to imbibe it, to feel it. तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के Therefore, remember your eternal period, the beginning period, the middle period, and the period of the confluence age. Remember your royalty of purity and your personality of the whole cycle. पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं। No matter what anyone does, no one can take away your ये personality. नशा है ना, You have the spiritual intoxication, वो है ये do you not? Who is having this spiritual intoxication? Very good. और डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है ना, Double foreigners, you have double intoxication. डबल नशा Do you है not? ना, You have double सब intoxication. बात का डबल, Do you not? You have double intoxication in everything. प्यूरिटी का भी डबल नशा, Double intoxication of purity, सहनशील देवी देवता बनने का भी double intoxication of becoming a Devi or Devta of tolerance. है ना, डबल। You have double. सिर्फ अमर रहे, Simply remain अमर immortal भवन in का this. वरदान कभी नहीं भूलना, Never forget the blessing of being immortal. डबल नशा सदा रहे। Have this double intoxication for all the time. अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, those who are householders, that is वैसे couples, सिंगल रहते, in fact you remain single, कहने में युगल आता है। but you are said to be couples. वह उठो, Get up, stand खड़े up. हो जाओ, युगल तो बहुत हैं, There are many couples कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं, and fewer Kumars and Kumaris. युगल बहुत है। There are many more couples than Kumars. युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया? So couples
Why has Bab Dada given you the direction to live at home with the family? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना। Why have you been given permission to remain as couples? Do you know why you have been given permission to live in your households? पवित्र रहने की Because while living as couples, you have to make the Mahamandaleshwars bow down at your feet. ईश्वरों को भी झुकाएगी। है इतनी हिम्मत, Do you have this much courage? मुश्किल है या सहज है? Is it difficult to live together and yet remain pure? And what do you say? Is it difficult or is it easy? कहते हो What do you say? सहज है, It is very easy. का है Are you sure? या कभी इजी, Or sometimes easy, sometimes lazy? सदा पक्के। Or is it very easy all the इसलिए time? बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम This is why, according to the drama, in order to challenge them, Bab Dada has made all of you examples in front of the world. अपवित्रता से निवृत्त रह Therefore, सकते हो while remaining in your household, तो are you able to remain free from impurity? हो ना। So you are those who issue a challenge, करने वाले are you not? या थोड़ा थोड़ा All of you are those who will challenge them. नहीं, You are not a little afraid, are you? चैलेंज तो करे, When you challenge them, पता नहीं क्या हो, you don't know what will happen. तो चैलेंज करो विश्व को, Challenge the world क्योंकि नई बात यही है because it is something new to live together and yet not have the slightest thought of impurity even in your dreams. यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। This is the speciality of Brahmin life of the confluence age. ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल, So all of you are such examples in the showcase of the world. सैंपल कहो, You are samples, examples. आपको देख करके सब में ताकत आएगी, On seeing you, सकते everyone will receive the strength that they too can become this. तो हम भी बन सकते हैं। If you become this, ठीक है, that even we can become this. शक्तियाँ Is ठीक this है, okay? Are you Shaktis all right? पक्के हो ना, You are pakka, firm. कच्चे पक्के तो नहीं। You are not sometimes strong and sometimes weak, are you? Pakka. बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं। Bab Dada is also pleased to see you. Congratulations. देखो कितने हैं, Look, there are so many of you. बहुत अच्छे हैं। Very good. बाकी रही टीचर्स की बात, Now the teachers remain. टीचर्स के बिना तो गति नहीं। There cannot be salvation without the teachers. टीचर्स उठो, Teachers stand up. अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। There are also very good Pandavas. वाह, Wow. टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे।
The speciality of teachers is that the future is या visible in the हरेक features of teacher every के teacher. फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई The angelic form should be visible in the ऐसे features of teachers every होना teacher. You have such features, do आप you not? फरिश्तों को देखकर और भी On फरिश्ते seeing you बन angels, जाएं। others will also become angels. कितने टीचर्स हैं Look, there are so many teachers. फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं There are many teachers abroad. अभी तो थोड़े आए हैं There are many teachers in the group from जो abroad. नहीं आए हैं Few have now come. उनको भी बाप दादा याद कर रहे Bab Dada is also remembering those who haven't come. It is good. अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें All of you teachers plan together how to reveal the Father through your behavior and your face. People of the world say that God is omnipresent, and you say that He is not. लेकिन बाप दादा कहते हैं However, Bab Dada says, कि अभी समय प्रमाण now according to the पिक्चर time, में बाप दादा the Father should be practically visible दिखाई दे in every teacher. तो सर्वव्यापी है ना। He is omnipresent, isn't He? लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। Now Bab Dada says, whomsoever they look at, they should only see the Father. के आगे छिप जाएं Your souls should remain hidden in the Supreme Soul, so that only the Supreme Soul is visible. ये हो सकता है Is this possible? अच्छा इसकी डेट क्या है Acha, what is the date for पापा this? पक्का करा रहे Baba is making you firm. डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना A date should be fixed. तो डेट Should it कौन not? सी है इसकी So, what is the date for this? कितना समय चाहिए How much time do you need? अब से शुरू करेंगे Somebody said from the gathering, शुरू करेंगे we will start अच्छी now. हिम्मत है। You will start. कितना समय चाहिए That courage is good. But how long do you need? चल रहा है It is now the year 2002. अभी 2000 कब तक So now it will be until the year 2000 and what? अटेंशन रखना है Therefore now teachers should pay attention अभी बाप के अंदर to be मैं seen समाई हुई as merged in the Father. मेरे द्वारा बाप दिखाई Let the Father be seen through me. प्लान बनाएंगे ना You will make plans for this, will you not? डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है Double foreigners are clever when it comes to having ये meetings. मीटिंग करना Now have a meeting इस for मीटिंग this. के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे Don't go back without having had this meeting of how the Father can be seen through each one of you. At present, Brahma Kumaris are visible. They say that the Brahma Kumaris are very good. कितना अच्छा है Now let them see how good their Baba is. तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना Only then will world transformation take place. प्रैक्टिकल में शुरू करें Therefore, you double foreigners will put this plan into a practical form क्या जवाब
Will you not? Will you do it? करेंगे। You will do it. पक्का? Is it firm? अच्छा, तो आपकी अच्छा। दादी है ना, तो उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी। Then the desires of your dadi will be fulfilled. Is this okay? अच्छा, अच्छा. देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी। Look, double foreigners are so serviceable. Because of you, everyone is receiving love and remembrance. ज्यादा तो नहीं कहेंगे, Bab Dada too has, लेकिन it cannot be said, greater love, स्पेशल प्यार। special love for you. क्यों प्यार है? Why does he have love for you? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, Because the double foreign souls who have become instruments for doing service have become instruments to enable the Father's message to reach different corners of the world. चारों ओर की प्यासी रह जाती। Otherwise, souls everywhere in the world would remain thirsty. Now the Father won't receive any complaints that he came in Bharat, देश में क्यों नहीं but those संदेश? abroad were not given the message. तो बाप का उलाहना पूरा करने में निमित्त बने हो। Therefore, you are instruments to end the complaints to the Father. और जनक को, दादी जानकी को कह रहे हैं, Baba is speaking about Dadi Janak. Janak too has a lot of enthusiasm that no country should be left out. बाप का It is good. उलाहना तो पूरा करेंगे, You will at least end the complaint to the Father. लेकिन आप दादी जानकी को बाबा कह रहे हैं, Baba is speaking to Dadi Janki. बहुत However, you tire your companions out a great deal. थकाती है ना। You do tire them out, do you not? जयंती थकाती नहीं है? Jayanti, जयंती बहन does she not tire everyone out? Babdada is asking Sister Jayanti. लेकिन थकावट में भी मौत समाई हुई है। However, pleasure is merged in this tiredness. क्या है? At first, it is like, what is this? भाषण करके दुआएं Same thing ले over and over again. However, चेहरा when you come back with the blessings, after giving lectures, अच्छा your face changes. उमंग उत्साह It is good. की विशेषता। Both dadis have the speciality of increasing zeal and enthusiasm. बैठ नहीं सकते। They cannot sit down quietly. सेवा अभी रही हुई तो है ना। There is still service left to be अगर done. नक्शा Is there लेके not? देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, If you look at the अगर map, नक्शे में whether of एक-एक Bharat or स्थान पर abroad, लाइट लगाते if जाओ, you continue to mark each दिखाई place, देगी कि अभी you भी would see रहे that many places still remain. ये बाप दादा भी खुश होते हैं। Therefore, और Bab Dada is कहते भी pleased, हैं। but he also says पर से बाबा दोनों दादियों को क्या कहते हैं? what Baba is speaking to both the dadis. ज्यादा नहीं थकाओ, Don't tire them out आप too सब much. सेवा में खुश है ना। All of you are happy doing service. अभी ये Are you कुमारियाँ not? तो भी टीचर बनेगी ना। Now you Kumaris will also टीचर become है, वह teachers. तो है ही। जो टीचर नहीं है वो टीचर बन के कोई Those who are नहीं teachers are teachers anyway. However, those of you who are not teachers will become teachers कुमारियों को and look after one or other center. डबल Will you विदेशी not? बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही। You will become hands, will you not? दोनों काम कौन से?
The double foreigners practice doing both types of work. संभालते You have a job and you also look after a center. डबल मुबारक This is why Bab Dada gives you double congratulations. अच्छा Acha. चारों ओर के अति स्नेही To the extremely loving children everywhere, समीप सदा आदि काल से to अब those तक who are extremely close, अधिकारी to those who have had a right to royalty from the सदा beginning अपने until now, चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले to those who reveal the sparkle of purity on their faces स्वयं and in को their सेवा behavior, और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा to those who become number one बनने वाले by constantly making intense effort सदा in बाप having के remembrance समान and doing service, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में to रहने those who वाले remain constant embodiments ऐसे of सर्व all तरफ के powers हरेक and all खुशी को virtues, like the बाप Father, दादा का याद to every प्यार child in all directions. नमस्ते Bab Dada's love, remembrance and namaste. हम रूहानी बच्चों की We spiritual children पिता love, remembrance, को याद प्यार गुड मॉर्निंग namaste and good morning to the Mother Father, विदेश Bab की Dada. मुख्य टीचर्स बहनों Bab Dada meeting the main teachers सभी from. ने के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं You have made very good plans क्योंकि for सेवा service समाप्त हो तब तो आपका राज्य because it is only when service is तो complete सेवा का साधन that your भी kingdom will आवश्यक है। come. लेकिन Therefore, मनसा भी methods होना of service चाहिए are also और essential. साथ साथ However, सेवा और service should स्वोन्नति also be done दोनों ही साथ with the mind as well as with ऐसी words. सेवा सफलता Let them be together. समीप लाती Let service and self progress सेवा के both be together. ही और सभी अपने Such अपने service स्थान पर brings success close. ही कर रहे Your instruments for doing service anyway. बाकी सभी जो काम दिया उसका All of you are doing good service at your own places. But now make plans for the work that Baba has just क्या given. क्या स्वयं में व Make सेवा a में plan for what वृद्धि growth has चाहिए, to take place addition in चाहिए। yourselves and in service, and what additions बाकी have to be बाप made. दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही है। Anyway, Bab Dada is always pleased to see the servers. सेवा केंद्र All the उन्नति को centers are पा रहे। progressing well. उन्नति है ना, There is growth. अच्छा है, Is there not? अच्छा It हो is रहा good. है ना, Everything is going हो well. रहा है Is it और not? होता It is good and it will continue to be good. सभी अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उनको पक्का करा। Now bring together those who are spread out here and there into a gathering and make them strong. चाहे कोई भी Show सेवा to कर everyone the रहे practical proof. भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, No matter what service some of you may be doing, अच्छे you चल make many different plans. You are doing that anyway. का You are moving along well. एक साम- But now bring a group of all of those people in front सेवा of का Baba सबूत so that the सारे ब्राह्मण proof of परिवार के service सामने is put in front of the whole Brahmin family. कहना। Is this all right? बाकी सभी अच्छे हो, Nevertheless, अच्छे all of you are good. You are the best of all. अच्छा Acha. शांत। आज का प्यारे बाप दादा का हम बच्चों के प्रति वरदान है। Beloved Bab Dada's a blessing for we children. स्मृतियों के तिलक द्वारा
बनाने वाले May you make your stage elevated चल अडू with a tilak of 3 types of awareness and thereby become बाप दादा ने unshakable सभी and बच्चों को immovable. इन स्मृतियों का तिलक दिया है Bab Dada has given all of you स्व children की a स्मृति tilak of 3 types of awareness. बाप की स्मृति One is the awareness of और yourself. श्रेष्ठ The कर्म second के is the लिए awareness of the Father. रामा And the की third is the awareness of elevated karma. That is the awareness of the जिन्हें ये drama. तीनों स्मृतियाँ सदा है Those who are constantly aware of these 3 types of awareness have an आपकी elevated स्मृति के state. साथ बाप की स्मृति Together with having the awareness और of being बाप a के soul, साथ रामा की स्मृति you also have the awareness of the Father. आवश्यक Then together with the Father, कर्म में it is अगर essential ड्रामा to का have the ध्यान awareness है of the drama. तो नीचे ऊपर This is because if you have the knowledge of drama in your जो karma, भी भिन्न there भिन्न won't then be any परिस्थितियाँ fluctuation. आती है, उसमें You will remain एक वो unshakable and immovable in all the different situations that arise. स्लोगन है Slogan: दृष्टि को अलौकिक Let your vision be alaukik, मन को शीतल your mind cool, और बुद्धि को रहम दिल कर and your intellect merciful. नवंबर मास सफलता मूर्त बनो The November month रोज के become the इशारे embodiment of success. आज 3 नवंबर Today is 3rd सेवा November. में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है The consciousness of being an मेरा instrument कार्य is the निर्विकारी basis और of मेरा हूँ success in service. ये तीनों विशेषताएं You निमित्त भाव automatically से develop the 3 specialities of being incorporeal, voiceless, and egoless with the consciousness of being an instrument. और मेरापन If there isn't the consciousness of being an instrument, विदा कर देता then the many types of I and mine न मैं make you slack in service. Therefore, एक तरफ do not have any निर्माण consciousness of I or mine. सर्वेंट और On the दूसरी one hand, be an extremely humble world servant, and on the जहाँ hand, निमित्त भाव be an authority of knowledge. बेहद Where there is the consciousness of being an instrument, of being humble, and being unlimited, there is success. Om Shanti. ओम शांति। आज भाई दूज है, सभी को Today is a Bhai Dooj. Everybody will get tilak and toli. You will all be seated in your places. श्री आलोक शुक्ला जी From New Delhi we have Alok Shukla ji. आप मंच पर आएंगे। आप मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ Members, Central Board of में Anti-Tax and Custom. You have come to Baba Zone. भाई जी आप You are welcome. जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। Brother Lalit will introduce themselves. आदरणीय गीता दीदी जी, बहन सोनिया जी का स्वागत करते Sister हैं। Geeta is दोनों का welcoming इकट्ठा Sister स्वागत Sonia. परिवार वाले हैं। और खुशी की बात ये है बहन सोनिया शुक्ला जी The happiness is Sister Sonia is very well known about the knowledge and she daily listens to the Murli. अभी आदरणीय ललित भाई जी परिचय देंगे। ओम शांति। आप सभी जानते हैं You all भारत know सरकार में in the government of फाइनेंस India, मिनिस्ट्री the finance और इसमें ministry मिनिस्ट्री के बाद
And after the ministry, there will be the बोर्ड board. में इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड, एक डायरेक्ट टैक्स There बोर्ड, is a direct board and indirect tax board. इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड के मेंबर हैं Member of the indirect जो tax सारे board. भारत की नीति निर्धारण और उसका एग्जीक्यूशन, The rules and regulations and execution will be there. इस डिपार्टमेंट में सेवारत हैं। 65,000 और are आप विशेष volunteers मेडिटेशन in करने के this लिए board. 2 दिन के लिए खास पधारे हैं। And for 2 days, the brothers and sisters have come. आपका बाबा के घर में बहुत बहुत हार्दिक So स्वागत we'll है, welcome you अभिनंदन है। to Baba's बाबा home. का घर आपका घर है, जरूर Baba's से home आप is your आते home. रहिए। You अभी continue to come here. तिलक और सौगात के द्वारा आपको And सम्मानित through tilak and Right. gift, they will be felicitated. ओम शांति। पहले श्री आलोक शुक्ला जी का गीता बहन जी साल उड़ा करके सम्मान करेंगे। First of all, Brother Alok Shukla ji will be felicitated by Sister Geeta. गीता बहन जी साल उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। ताली बजाएंगे सभी। ये भाई जो गेट पर खड़े हो गए हैं, कृपया भी बैठ जाइए, ठीक है। एंड सोनिया जी को भी साल उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। And Sister और आज भाई Sonia दूज is है, also तो felicitated. बहनें अपने आत्मा रूप में भाइयों को तिलक दे रहे हैं। मुख मीठा करा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण का चित्र भेंट कर रहे हैं। They are being इससे sweet बड़ा in their मोमेंट mouth. और क्या हो सकता है। They are given सत्ययुगी a देवी दुनिया की very राजधानी beautiful moment यात्रा। of Shri Lakshmi and Shri Narayan. अभी हमारे बीच से भ्राता जी प्रस्थान करेंगे और यहाँ आपके लिए कार्यक्रम रहेगा। 2 लाइनें लग रही हैं, एक माताओं बहनों की। अब There माताएं will be बहनें 2 थोड़ा धीरे lines. रखो। पहले हम टीचर्स बहनों को बुलाएंगे, ठीक है। इनको माताओं बहनें आगे की हट जाइए, प्लीज बैठ जाओ अपने स्थान पर। The mothers and the brothers, they will be having 2 माताएं different बहनें lines. अपने स्थान पर जाकर के बैठे। पहले हम टीचर्स बहनों को बुलाएंगे, मधुबन की समर्पित बहनों को बुलाएंगे। इधर ये भाई सब जाकर के बैठो पीछे। पहले हमारे मधुबन के बड़े भाई आएंगे। सभी जितने भी ये भाई लोग खड़े हैं, Tilak सब अपने and स्थान Toli पर will be जाके given now on behalf of Bhai Duj. पहले प्रथम पंक्ति में जो हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हैं, ओम आत्म प्रकाश शांति। भाई हैं, डॉक्टर बनारसी भाई हैं, गोकुल भाई हैं, मोहन सिंगल भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, विनोद भाई हैं, रमेश भाई जी हैं। उधर से लाइन अभी नहीं चलेगी, उधर से कोई लाइन अभी नहीं चलेगी, ठीक है। इधर से समर्पित टीचर्स बहनें, मधुबन की बहनें लाइन में पहले आएंगे। इन माताओं को सबको रोक दो, बंद कर दो। और यहाँ से 4 लाइन चलेगी, ठीक है।